हेलो एवरीवन। आज हम आपसे डील करेंगे एक नॉवेल जो बहुत ही फेमस है। चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। देखिए, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है एबिल मैकविच। ये क्वेश्चन देखिए आपके में पूछा है कि स्टेला के पापा का नाम क्या था, हु इज द फादर ऑफ स्टेला। स्टेला एक्चुअली एक कैरेक्टर है, यू कैन से हीरोइन ऑफ दिस नॉवेल। पिप आप समझिए एक प्रोटैगनिस्ट है, ही इज अ हीरो, बट स्टेला इज हीरोइन। स्टेला के पापा is एबिल मैगविच। वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ एबिल मैगविच। ये समझो पहले कि एबिल मैगविच है क्या, कौन है ये। एबिल मैगविच एक्चुअली एक व्यक्ति है जो जिसे सजा हो जाती है, वो फेक करेंसी के लिए इससे सजा हो जाती है। कंपीसन के साथ एक करेक्टर देखे, दूसरा लिखा है कंपीसन के साथ, इन दोनों को सजा होती है। और फाइनली ये होता है कि मैगविच को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कंपीसन को 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट होगा। बट यू नो व्हाट हैपेंस, मैगविच जो है जेल से फरार हो जाता है और वही कम्स टू मीट विद पिप। व्हेन ही मीट्स पिप, पिप से जब वो मिलता है तो पिप उसे खाना देता है। तो मैगविच को काइंड ऑफ affection towards पिप, that पिप helped him. सो आई मस्ट टेल व्हाट हैपेंस एक्चुअली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13th नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का। एंड इट्स अ बिल्ड इंसन रोमन। बिल्ड इंसन रोमन का मतलब होता है कि कोई करेक्टर कैसे एक एज से बड़ा होता है और फाइनली बड़ा होता है। तो ये डेविड कॉपरफील्ड की सेकेंड नॉवल उनकी जो थी, एंड आफ्टर दैट इट वाज पब्लिश इन 1816 टू 1861 में पब्लिश हुआ। 1861 में ये चैपमैन एंड हॉल ने इसे पब्लिश किया 3 वॉल्यूम्स में। अब देखिए आगे अगर हम दूसरी स्लाइड पर देखते हैं कि what actually the story is all about, then we can find कि this story is set in 19th century, setting his character Abel Magwitch to meet a man called Compeyson at the Epsom races. Compeyson, Dickens wrote, had been brought up in a boarding school and was an attractive, charming gentleman. Magwitch at the same time began a relationship with a mentally unstable woman named Molly. आपको ये समझना होगा कि जो स्टेला की माँ है, सी इज मॉली। सो जो आप कह सकते हो मैगविच और मॉली की बेटी है स्टेला, ये चीज़ क्या कहते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। और इसमें मॉली ने एक लड़की को जन्म दिया, हु इज नेम्ड एज स्टेला लेटर ऑन, एंड पीप इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हर। एंड व्हेन शी वाज जस्ट 2-3 years old, Molly's trial began. Molly का ट्रायल ये था कि she was convicted of murder. Actually murder's trial was there. So Molly told Magwitch that she had killed the child, whereas she actually had not killed. So Magwitch also knew that Stella was dead, but Stella remains alive. And later on, it is disclosed that Stella is daughter of Abel Magwitch. This is made clear through the character of Wemmick, who knows the story of Molly and Magwitch love story. Pip comes to know, but finally, what happens here in the life of Magwitch, वो ये है कि मैगविच एंड कंपीसन बोथ मीट ऑन boat and water actually, but Magwitch is arrested by the police and he suffers a chest wound and he is about to die. Pip goes and visits him. Magwitch receives a death sentence. At the same time, his money was forfeited. So the loss of Pip's great expectations this way, that he was expecting money from Magwitch, that is the loss of Pip's great expectations. When Magwitch is declining in health, but Pip says him that you don't know one fact that I am going to tell you is that your daughter Stella is still alive and he is in love with her. So Magwitch dies, but he has a face full of happiness, a convincing face. A kind of happiness is there just because he thinks that finally Stella has got the right person in Pip. So here the story ends. I hope you got it. Stella is the daughter of Magwitch, Abel Magwitch, and Molly. Pip is the person who gives him some food, so Magwitch is very much attracted towards Pip. He gives him sometimes food and money without his knowing. Pip used to think this is given to him by Mrs. Havisham, but it's not the case. It's a Magwitch who is supporting Pip financially, but at the last Magwitch is arrested and he is sentenced to death, and his money also is forfeited, so the loss of great expectations from Pip's side. But when he is about to die,
because of illness, Pip discloses him that it is Stella who is his daughter, and he is in love with her. So here it's a happy ending, and that's how it is. Thank you very much for listening to me. Bye bye.